हाँ, अब आप मुझे पहले एक एक करके अपने बिजनेस के बारे में बताओ। तो नीतू, आपका क्या बिजनेस है? सर मैं फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ और वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बनाती हूँ फ्रीलांसिंग मोड पे। वेरी नाइस। अब आप देखो, ये जो आप काम कर रहे हो ना, इसकी बहुत सारी वीडियो आप बना सकते हो राइट। यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे। राजकुमार जी, आप क्या करते हैं? सर बाय प्रोफेशन मैं लेक्चरर हूँ इकोनॉमिक्स का। अच्छा, वेरी हरियाणा नाइस। गवर्नमेंट में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बाय वेरी प्रोफेशन इकोनॉमिक्स लेक्चरर हूँ। बाय पैशन मैं आई एम ए मैन ऑफ लिटरेचर। नाइस। I like to motivate and transform the lives of people, especially those people uh, who are not able to, be a public speaker and who have some difficulties in sharing their views. ओके, वेरी नाइस। तो आप लाइफ स्किल्स के ऊपर अपना चैनल बनाओ यूट्यूब पे। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑडियंस एट लार्ज। और आपके पास तो बहुत बड़ा ऑडियंस है स्टूडेंट्स का, जो आप बता रहे हैं, लेक्चर आ रहे हैं आप। इट विल जी हेल्प यू। सतेंद्र दीप कौर जी, व्हाट डू यू डू? सर मैं प्राइमरी टीचर हूँ। ओह, वेरी नाइस। इन व्हिच प्लेस? सर पटियाला पंजाब। ओके, वंडरफुल। तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं प्राइमरी टीचिंग में? सर ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट्स। एक निश सर पॉइंट। हाँ, प्लीज। सर मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है जिस पर मैं अपने बच्चों की एक्टिविटीज रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कुछ ना कुछ एक्टिविटी बना लो, एक निश बना लो। गुरसेवक जी, व्हाट डू यू डू? Actually, Sherry, I own two factories, so I have say employees up to 40 to 50 people. What the thing is, the public speaking, what I want to learn from here is that I should be able to address them during say foundation days, और जब हमारी एसोसिएशन की मीटिंग्स होती हैं, दे कॉल मी, they wish that I should address them, but I hesitate. So I don't want to have a YouTube channel. My purpose is to serve my purposes, very localized purposes. ठीक है, गॉट योर पॉइंट। बट फिर भी मैं एक चीज बोलूंगा, आप YouTube को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करो। कुछ अपनी वीडियो बना बना के डालते रहो उसमें। But I don't want to be means like I don't want to earn from being a public speaker. I don't want it. मैं बहुत satisfied हूँ अपने से प्रोफेशन से। नहीं नहीं, आपने अर्न कुछ नहीं करना, मैं समझ गया। यू वांट टू बी इन द सेम प्रोफेशन यू आर इन। आपको कोई स्पीकर नहीं बनना, मैं यही समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने पर्सनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए यूट्यूब यूज कर सकते हो, ये कह रहा हूँ मैं। अब आपके पास अगर मैं पूछूं, 5-7 वीडियो है आपकी जहाँ आप बोल रहे हो, एसोसिएशन में आप जाते हो, कहाँ बोलते हो आप? कोई वीडियो है आपके पास? डू यू हैव एनी वीडियोस? मैं वहां बोलता हूँ जहाँ पे बिल्कुल फंस जाता हूँ और एस्केप रूट बिल्कुल एकदम ब्लॉक्ड रहता है। तो ठीक है ना। देखो, अब आपके पास, देखो, ये तो शौक की बात है। आपके पास शौक है, पैशन है। इफ यू रियली वांट टू हैव योर वीडियोस समवेयर अपलोडेड एंड यू वुड लाइक टू कम बैक in the future to see how you spoke 2 years back, 3 years back, 10 years back, ऐसा कुछ शौक है, तब तो बहुत मजा आएगा आपको ये सब करने में। ऐसा कोई शौक नहीं है तो ठीक है, ना जो वीडियोस हैं वो क्या है कि जो कॉलेज के एलुमनी एसोसिएशन में कुछ टेक्निकल जो सेशंस हमारे एचओडीज और डीन ने मेरे से परस्यू करके करवाए कि आपको ये करना ही करना है, दोज वीडियोस आर देयर इन द कॉलेज यूट्यूब चैनल। वो भी 8-10 होंगे, उससे ज्यादा नहीं, और वो भी मेरे को करने ही पड़ेगी, इसके बिना कोई गुजारा नहीं है। एचओडी सेड कि यू हैव टू डू इट, देन आई डिड इट, नॉट आउट ऑफ माय चॉइस और से आउट ऑफ, मतलब दैट वाज अ कंपल्शन। Oh, I got that. लेकिन if you go ahead in this journey of public speaking, आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा स्पीकिंग में, और अपनी वीडियोस को कहीं रखना पड़ेगा। जैसे आप घर में एल्मिना यूज करते हो अपना सामान रखने के लिए, सारा सामान यूज नहीं करते, लेकिन एल्मिना तो रखी हुई है ना घर में। ऐसे ही आप अगर पब्लिक स्पीकिंग जर्नी में हो तो आपको अपना जो वीडियोस है वो कहीं रखना पड़ेगा, कोई वॉल्ट क्रिएट करना पड़ेगा।
तो आपको YouTube एक फ्री वॉल्ट एक्सेस भी तो दे रहा है ना, उसका इस्तेमाल तो कर लो, अपनी वीडियोस बना बना के वहां डालते रहो। यू नेवर नो आपका कब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, कब आपको अपनी पुरानी वीडियो देखने का मन करे, उस समय फिर वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। अगर यूट्यूब पे डाल के प्राइवेट मोड पर रखी होगी ना, सब जगह में सारी चीज मिल जाएगी एक जगह पर। What I want to learn is, Yeah. what I want to learn is, I want that when I speak in front of mic, right? My knowledge, my wisdom, my experience, and what I speak, and my mouth should be in line. That's it. That's it. That's it. I don't want to earn from public speaking. I don't want to impress anybody. I just want that whatsoever I know, I should be able to retain that in front of mic. That's it. ठीक है, where are you from? My intention is very clear. समझ गया मैं। आप कहाँ रहते हो? चंडीगढ़। अब देखो, इसमें दो पर्सपेक्टिव देता हूँ आपको। एक तो डायरेक्ट पब्लिक स्पीकिंग से अर्निंग करते हैं हम, व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, एंड जैसे मैं करता हूँ, प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, पीपल कॉल मी, दे पे मी। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप डायरेक्टली अर्न नहीं करते, आप अपना पीआर करते हो, मार्केटिंग करते हो, एसोसिएशन में अपनी विजिबिलिटी दिखाते हो, रीच बढ़ाते हो, क्रेडिबिलिटी क्रिएट करते हो। लोग कहते हैं तुसी की कम करते हो जी, मेरी तो 2 फैक्ट्रियां हैं। अच्छा जी, ये वाला बिजनेस है। सो पीपल इनडायरेक्टली गेट इन टच विद यू थ्रू योर स्पीचेस, एंड देन दे स्टार्ट डूइंग बिजनेस विद यू। So here directly you are not earning from your speech, but indirectly you are earning from your speech. Yes. I have many such clients who indirectly earn from their speech. I can share list of names with you, and they are into big businesses. With all respect to you, I think you are into SME category. I am training a lot of people who are handling big corporates and big industries also, क्योंकि उनको वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है अपना टैलेंट को, स्किल को शोकेस करने की। कुछ लोगों को तो कैमरा फोबिया है जबरदस्त वाला, तो उनको वो कैमरा फोबिया से हटाने में हेल्प करता हूँ मैं। कुछ लोगों को मीडिया के सामने आके कुछ समझ नहीं आता बोलना। कुछ लोगों को, जैसे आपने अपना बताया ना, यू नीड टू एक्सप्रेस योर विजडम, थॉट्स, इट शुड बी अलाइंड विद योर पर्सनालिटी। कुछ लोगों को वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। सो इट्स द प्रॉब्लम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन प्रॉब्लम। लाइक दिस वन ऑफ माय क्लाइंट विनीत गिलोत्रा फ्रॉम अमृतसर, वो अब वहां पर जोश टॉक स्पीकर भी बनाया उनको हमने। मतलब जीरो से जर्नी शुरू हुई थी, कहाँ किताबें लिखता सीगा, पोएट्री, शायरी लिखता सी। टुडे ही इज अ वेरी फाइन स्पीकर, he won championships here in Delhi, he became Joe Stock speaker. So it's a journey, not, so public speaking is not about the sprint, it's about the marathon. So Right, it's right. And what you are saying, it's more of you doing things with the help of an expert, with the help of a mentor, helping you through consultation. So that is what you need to keep in mind. ठीक है। सो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी वीडियोस बनाते रहो, लॉन्ग रूट तय करो, बोलने का एक फ्लो लेके आओ, देन यू गेट इनटू द एक्ट। ये दूसरा तरीका है, ये थोड़ा लंबा है। पहले वाले तरीके में क्या है, यू डायरेक्टली गेट इन टच विद द मेंटोर एंड स्टार्ट टेकिंग मेंटरशिप सेशंस, एंड ही इज गोइंग टू गाइड यू। ये भी कर सकते हो आप, लेकिन वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आई एम नॉट ट्राइंग टू promote anything or sell anything to you, but all I'm saying is these are the 2 ways to do it. ठीक है। What I think is कि what I need is that should be the that should be related to something that I should be calm, or I should be composed in any situation. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ that needs an attitude shift. How many people are in front of? एटीट्यूड तो है ही है, प्रैक्टिस थोड़ी सी चाहिए। आई एम सेइंग दिस विद एक्सपीरियंस। यस यस यस, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं। हाँ, एटीट्यूड भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। हाँ, ये है कि इफ यू आर फास्ट लर्नर, इफ यू फॉलो द राइट टेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ अ मेंटर, वो जल्दी हो जाएगा बहुत। ये फायदा मिलेगा आपको। जैसे यू आर स्पेंडिंग योर क्वालिटी टाइम ओवर हियर, ठीक है। अब आपको कोई 1 या 2 लर्निंग मिलेगी, तो यू आर अ फास्ट लर्नर, यू विल अडॉप्ट एवरीथिंग वेरी फास्ट। These are the benefits of attending sessions. ठीक है जी, great, thank you so much. Thank you. Okay, Ajit, Akhilesh, are you here? Switch on the videos and talk to me. Ajit, Yes, yes, sir. Yes, sir. Akhilesh, you are a student. I know about you. Ajit, what about you? Mute कर लो, Akhilesh, mute कर लो.
Ajit, is he here? Ajit, are you here? Can you hear me? All right, no problem. सर एक आपको एक मुझे क्वेश्चन पूछना था कि हाँ, सर बोलिए। मैं जब स्टेज में जाता हूँ कुछ बोलने के लिए वगैरह, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन वगैरह रहता है ना, मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ ना, तो सर मैं जब सामने जाता हूँ तब डर बहुत लगता है कि हार्ट बीट वगैरह तेज होती है और उससे हम नहीं बोल नहीं पाता, यानी कि बोलता हूँ वैसा कुछ नहीं बोलता हूँ, पर एक एक मुंह में ब्लॉक आ जाता है, वैसा कुछ हो जाता है। तो एक आपकी राय क्या है कि व्हाट सजेशन फॉर मी मेरी राय इसमें यह है फ्रॉम कि सबसे पहले तो आप अपने पब्लिक स्पीकिंग वीडियोस बनाने चालू करो, सबसे पहला। ठीक है। दूसरा, आप अपने आसपास कोई भी चीज देखते हो, जैसे आपने यस सन सर देखा, नेचर देखा, फ्लावर देखा, प्लांट देखा, बल्ब देखा, आइसक्रीम देखी, चपाती देखी, मम्मी को देखा, पापा को देखा, जिसको भी यस सर देखते यस हो, जिसको भी देखते हो, जिस भी वर्ड को देखते हो, उस वर्ड पे एक प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दो, जो भी चीज यस सर आसपास हो रही है। दूसरा तो ये सजेशन देता हूँ। तीसरा, आप टॉक टू किड्स, जैसे आप ग्रुप ऑफ किड्स के साथ बात कर सकते हो। घर में कोई आपका कोई बेबी हो, आपके ब्रदर का, सिस्टर का, उसके सामने बैठ के स्पीच दो। बच्चों के साथ ना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो हंसेंगे आपको देख के, आप भी मुस्कुराओगे। बट आप हाँ ना हाँ ना कोई एक कॉन्सेप्ट ले लो और उसको समझाओ बच्चे को, और उसको हाँ आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो। उससे क्या होगा कि आप उस बच्चे को जब वो चीज एक्सप्रेस करोगे, तो आप हम्म उसको बहुत इजी लैंग्वेज में करने की कोशिश करोगे। एम आई राइट? यस यस तो सर इजी लैंग्वेज में करने की वजह से आप पब्लिक स्पीकिंग के स्किल डेवलप करोगे, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में भी हम जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स होते हैं उसको इजी लैंग्वेज में डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। यस सर ठीक है। उसके अलावा आप अगर कराओके सिंगिंग करते हो, कभी कराओके सिंगिंग ट्राई किया आपने कभी? नो सर नो, बट आई विल ट्राई सर, नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई। कराओके सिंगिंग करने से ना, आप सबसे पहले क्या करोगे, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा, स्क्रीन पे लिरिक्स दिखेंगी और आप गाना गाओगे, जो आपके फेवरेट गाने हैं। इवन इफ यू आर नॉट अ सिंगर, आप गाना गाओगे तो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस क्लैरिटी आएगी, आपकी वॉइस इंप्रूवमेंट होगी। उसके अलावा आप कराओके सिंगिंग में एक एनर्जी और एंथुजियाज्म पे भी कंट्रोल क्रिएट करना शुरू कर दोगे। ठीक है। यस और ये सब करने से आपका पब्लिक स्पीकिंग फियर धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा। यस सर। ठीक है। और इसके अलावा ब्लॉक्स क्यों आ जाते हैं सर, वो ब्लॉक्स क्यों आ जाते हैं? हम जब बोलते हैं ना, कुछ हमें बोलना होता है, और या कुछ हमें एक्सप्रेस करना होता है, तो उस टाइम कुछ ब्लॉक्स वगैरह आते हैं। और सर मेरा एक आपके अब यानी कि मुझे एक आपको पूछना है कि स्पीड स्पीड इम्पैक्ट करती है कि हमारे बोलने की स्पीड जो होती है ना, वो वो कुछ इम्पैक्ट होता है क्या उसका हमारे पब्लिक स्पीकिंग पे, या कहीं भी बोलने के लिए वैसा? पब्लिक स्पीकिंग में आपकी स्पीड बहुत जरूरी है। रेट ऑफ स्पीच हमारी 3 तरह की होती है, फास्ट, ओके मीडियम एंड स्लो। तो आपको मीडियम रेट ऑफ स्पीच में बोलना होता है, ये वॉइस मॉड्यूलेशन का पार्ट होता है। जैसे मैं अभी यस आपसे सर बात कर रहा हूँ, ये मीडियम रेट ऑफ हाँ स्पीच है, तो मैं इस मीडियम रेट ऑफ हाँ स्पीच में आपसे बात कर रहा हूँ। तो सर, आपको भी मैं भी आपके जैसा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे बोलते हैं सर, यानी कि आपकी स्पीड जो रहती है ना, वो आई लाइक लाइक सर, आई लाइक योर स्पीड। तो धीरे धीरे अलाइनमेंट हो जाएगा आपका भी। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप धीरे धीरे अलाइन कर लेंगे इसको, लेकिन धीरे धीरे यस तब सर अलाइन कर पाएंगे जब स्पीकिंग ज्यादा करेंगे। ठीक है। यस सर यस यस आई होप आई हैव आंसर्ड यू। और आपका जो दिल धक धक तेज होता है ना, वो इसलिए होता है यस सर क्योंकि आप कॉन्शियस हो जाते हो। हमारा ब्रेन यस ना सर हमें ट्रिगर करता है। आप कभी भी ना करना मत, वैसे रियल में ऐसे बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी अपनी उंगली लेना और बिजली का सॉकेट होता है ना, हाँ उसके पास लेके जाना। हाँ बिजली के सॉकेट के पास लेके जाना, उसको बोला आज तेरे को बजा दिखाता हूँ, करंट लगा के दिखाता हूँ, ऐसे डालना उसके पास। आपका ब्रेन आपको सिग्नल करेगा, ओए क्या कर रहा है, पागल है क्या, अरे आता आता क्या कर रहा है, नहीं ये नहीं करना। आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा। हमारा जो ब्रेन है ना, यस वो एक्चुअली में सिक्योरिटी के लिए बना है। आप छत के कोने पे खड़े हो जाओ, वहां से नीचे 100 फुट की छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाओ। आपका क्या, अभी अखिलेश तैयार है, चल छलांग लगाए। आपका ब्रेन कहेगा, आई यू इडियट, टफर, दिस लॉन्ग वे टू गो, व्हाट आर यू थिंकिंग, डोंट फिनिश इट सो अर्ली, नीचे आओ। आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा, बिकॉज योर माइंड इज ब्रेन वायर्ड फॉर सिक्योरिटी। समझ आया बात?
ऐसे ही जब आप Yes, पब्लिक sir. स्पीकिंग करने के I लिए got स्टेज it. पे जाते हो ना और पहली बार करते हो तो आपका ब्रेन क्या हाँ। कह रहा होता है? अरे यार कहाँ फंस गया, मत जा यार, बहुत अरे मत जा यार, वो बहाना मार दे, पेट में दर्द हो रहा है, बोल दे आज मैं भूल गया, बोल दे कल मदर की तबीयत खराब हो गई थी, बहाना मारते नीचे उतर जा। और फिर आप क्या बोलते हो? आई एम सॉरी सर, टुडे आई थिंक आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई विल, कैन आई ट्राई टुमारो सर। और आप कुछ भी बहाना लगा के नीचे आ जाते हो, क्योंकि आप अपने उस ब्रेन के ट्रैप में आ गए। उस समय आपको अपने ब्रेन को बताना है, सेल्फ टॉक करनी है कि आई नो यू आर सिग्नलिंग मी फॉर सिक्योरिटी, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी, सपोर्टिंग मी, बट दिस इज द मोमेंट व्हेन आई हैव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। I do not have to be somebody else. yes. I have to be myself to express my views. That's all. Thank you very much. Please be with me. Yes, sir. I Yes. trust you, my brain. तो जब आप ये करोगे ना, सेल्फ टॉक करोगे, आपकी सेल्फ एस्टीम यहाँ पे होगी ना, यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे सिर से भी ऊपर। पब्लिक स्पीकिंग इज द गेम ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम। क्या मैं कर सकता हूँ? मैं ये क्यों नहीं कर सकता? क्या मैं पब्लिक स्पीकर बन सकता हूँ? मैं पब्लिक स्पीकर क्यों नहीं बन सकता? क्या मैं 100 लोगों के सामने बोल सकता हूँ? मैं 100 लोगों के सामने क्यों नहीं बोल सकता? Ask the right questions to get the right answers. If you ask the wrong questions, you will get the wrong answers. You getting it? Ask the right Yes, sir. Yes, questions. I get it. Your brain will get aligned. So I'm connecting you to thought clarity. The moment you have thought clarity, then everything will become easy for you. आज अगर थॉट क्लैरिटी ना होती ना, तो लोग कोविड-19 में फंस जाते, बबक जाते, खत्म हो जाते। सब लोग नहीं मरे, कुछ लोग जो वीक माइंड के थे, जो प्रॉब्लम के साथ, जिनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, वीक माइंड वाले जल्दी इस चीज का शिकार बने। थोड़े से स्ट्रॉन्ग माइंड में थे, हिम्मत नहीं हारी, सेल्फ टॉक करा, आगे बढ़ गए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बहुत सारे लोग जो मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, you know, I know, they all are here, they all are saved. So it's all about here. इसलिए पब्लिक स्पीकिंग में आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। किसी भी चीज में जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपका मेंटल स्ट्रेंथ जरूरी है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो स्पीकिंग है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो एक्टिंग है, परफॉर्मेंस कोई भी है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, और वो मेंटल स्ट्रेंथ ही आपको ड्राइव करता है। तो मेरा एक और एडवाइस है, आप कोशिश कीजिए कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपका मेंटल स्ट्रेंथ क्रिएट हो। रनिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कोई ऐसी चीज जो आप पहली बार कर रहे हो उसे कीजिए, मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होता है। कभी सुई में धागा डाल के अपनी शर्ट का बटन खुद लगाया है? आई प्रॉमिस यू, आप लगा के देखो एक बार, मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होगा। तो हमेशा हम कह देते ना अपनी बहन को, यार तू लगा दे, मम्मा कहते हैं मम्मा शर्ट का बटन लगा दो, ऐसे ही होता है ना। मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप तब होता है जब हम वो काम करते हैं जो हमने पहले किया ना हो, या हम वो काम करते हैं जिसमें हमारा मन कह रहा था ये काम नहीं करना, और आपका सेल्फ एस्टीम कहता है क्यों नहीं करना, करते हैं यार, कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमें ही करना है, यू गॉट टू डू इट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होता है, एंड दैट्स हाउ यू बिकम बेटर। ये आपका सेल्फ ग्रोथ होता है। यस नो, आर यू विथ मी? राइट? तो ये चीजें आपको करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज को करिए, मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होता है उसकी। चलिए, ग्रेट। आज हमारा सबसे पहला डिस्कशन YouTube चैनल का स्टार्ट हो चुका है। We have already confirmed that we are going to make up a channel. Today I'm going to talk about how you can create your videos. And before that, I want to ask you, what made COVID-19 special? COVID-19 had been blessing in disguise. How many of you agree? Just type in the chat box, agree. Or disagree, then disagree. Blessing in disguise because so many people were able to understand the power of digital communication. So many people were able to understand how to communicate with each other through digital means. And I'll give the example of my mother. She was not prone to usage of mobile phone, especially WhatsApp. Today she know how to operate WhatsApp.
Today she sends me video message. Today she calls me on video calls. She sends me audio message. She operates her own YouTube channel. My God. Until, I mean, in COVID, I mean, when COVID-19 started, it was not at all like this. She was not even able to operate a mobile phone. She used to ask me, how did this happen? What will this, how will this contact will be saved? When I will go to the screen, what will happen? She used to ask so many questions. But one thing which I really liked about my mom is that she was always curious to learn. And today she operates mobile phone better than a kid probably of age 10 or 12. Just because she was eager, she was curious to learn. How many people you find who are at the age of 70 are able to operate this kind of mobile complex system? I mean, my mother is a great example. So COVID-19, she was not able to go to Sikh temple. She was not able to perform seva, and she got herself into mobile phone. She used to listen lot many bhajans and lot many shabads and part and everything, and then she got into this. So it's the passion. We all had been through unprecedented times into COVID-19, and this is one of the things which I probably have noticed, that people got very, very connected to screens. How we have started each other talking to each other was through screens, and it has made a lot of people from camera shy to camera fly. People literally started flying. Another good example is this small incident, and this took place in a small village of Jharkhand called Dumka. If you heard about this, in this village, the students and their parents have drawn the charcoal board outside their huts. They cannot afford a mobile phone of worth of 3,000 also. So lot many students were privileged to get mobile phone screen in front of them, and they started taking online classes. But what about these people of tier 3, tier 4 cities? They don't have revenue, they don't have income, they don't have mobile phone. So they started operating outside their hut with that distance of, I think there was one statement which got very popular. I'm just forgetting that statement by Narendra Modi ji, which we said continuously during lockdown. "Do gaj ki duri, mask hai zaruri." Yes, this was the statement. So they also followed that statement of "Do gaj ki duri and mask hai zaruri." This was all in news, and the teachers were keeping their Bluetooth speakers on their shoulder and using the microphone, and they were delivering the classes. This is the Badalta Bharat. This is the revolution which we Indians brought in. This was all over the world, by the way, okay? This was a big news. Dumka village, Jharkhand. And then this entire village was turned into classroom. Can you beat that? And they have narrated this entire project, Shiksha Aapke Dwar. Shiksha Aapke Dwar. That's why I said that it's a blessing in disguise. Now imagine if you're going through some tough time of your life, you're going through some real rock bottom of your life. What are you thinking right now? You must be thinking to give up. Don't you dare do that. That problematic situation has not come to break you, it has come to make you. Become the man or woman of substance and get into the act. You will become something, I promise you. And from this moment, virtual speaking took the action. And speaking gave a hope to the world in COVID-19. At least people can talk on the screens, they can interact with each other, and people started understanding the power of effective communication. And many of the people who were not able to speak in front of camera, they started speaking in front of camera. We've seen so many Facebook lives, we've seen so many YouTube lives, people recording videos. I mean, videos were flooding all over the world. I never saw a jump of more than 25,000 followers on TikTok. Can you believe it? I got 25,000 followers on TikTok within a month's time. I still am not able to understand how did that happen, but it happened. Just because I was posting some videos. Though after some time they removed TikTok app from India, they banned it, but it happened.
Many of the people were proof. And I saw terrific jump in the way people started communicating with each other through video calls, and video communication started happening. People starting realizing the power of communication and importance of public speaking. So now public speaking, virtual speaking is a journey of camera shy to camera fly. That's the journey you got to take. And you got to understand that if you want to learn public speaking skills, you need to overcome the public speaking fear. And this can happen because when you speak in front of the camera, you utilize the same nerve as you do on the stage when you're talking with a lot of people. You apply the same nerve. And that is why I'm asking you, I'm proposing you, I'm helping you to take action and take inspiration so that you can start talking in front of camera, create more videos, Gursevak ji, create more active videos, Rajkumar ji, create more motivational subject videos, Neetu ji, create more educational videos, Satinder ji, and get connected to a lot of students, Akhilesh and Ajit. And that is where you will start feeling the change in you. Now, how will you do virtual speaking is what we need to understand, and we're going to talk about that. So virtual speaking has certain techniques. Now I'm going to share with you the recording technique. Now when you're recording, start living that moment in front of the camera. That's the best way of recording yourself. When you start living that moment, how you will react to that moment, how will you explain that point so that people will connect with you with authenticity, because you are living that point in that very moment. In public speaking also, when we speak on the stage, we live that moment. And if you learn this art of living that moment in front of camera, you are a game changer. Live the moment. That's the recording technique. Another technique which I want you to apply is start visualizing something in front of the lens. If you are explaining something about some scene, some story, start creating a visual and start watching that visualization in front of you in the camera lens. I promise you, two things will happen. Number one, your natural voice will come out. Number two, your natural expressions will come out. Try that. So that's how we can record our videos using these two techniques. Now I'm going to give you 4 suggestions for creating public speaking videos and quality public speaking videos. Number one is the video clarity. So video is something which is related to your visibility. You need to have the correct layout. If you see my hands right now, this is the video layout for you. Half chest should be visible in your video layout. Your hands should be visible. Number one, your face is the subject in the camera. Number two, your hands should be visible. Your hand movement should be visible. Number three, your half the body, if not half the body, at least half the torso. This is the torso, just below the chest area, it's torso. So half the torso should be visible if possible, because all the time you cannot stand in front of the camera and align it. So these are the best ways how you can connect in front of the video. Second is the background. Now I was checking with a lot of people, and today people have took my advice very seriously. Everybody has blurred it, and just to compliment all of you, I have also blurred it. Now this is another feature which you can use if you probably don't want anybody to see what's happening in the background. But if you really have some nice background, if you want audience to see that background, you can definitely set up something nice, a small tree, some greenery in the background, some RGB light, red, yellow, green, blue, something of the sort which is showing some natural background. That's interesting because your background tells a story. If there's a picture behind you of your family, your background tells a story. If there's an almirah, a fan, a background, you tells a story. So everything which you are showing in the screen tells a story. Now, if you see my screen right now, let me remove the blur. Does it tell a story? Can you see all my accolades over here? Can you see a few books? Now, that's my story. I want people to see what I have achieved.
So the moment you will share your background, now I'm blurring it. The moment you will see the background, or probably people who are watching your video will see the background, they will connect to the story behind as well. Background is important. Third is the light. So the objective of light is to eliminate shadow. How will you eliminate shadow? Put in the ring light. Now there are different sizes of ring light available from 8 inches to 32 inches. It's available in the market from the range of 600 bucks to 10,000 bucks. Now there's a professional light also available. I bought those professional lights because I'm regularly recording my content for YouTube. You can also do the same. I bought Kodak. There are many companies which are available. You can try Digitech also if you want to go for economical range. But the thing is, you got to have light to eliminate shadow. Eliminate shadow coming on the face, eliminate shadow coming on the background. Light is an important factor. Fourth is the audio. Now, if you have a 2-hand distance from the gadget which you're recording on laptop or mobile, a 1-hand distance, a 2 feet distance, then you can use the gadget mic, which is connected to or which is automatically there in laptop or mobile phone. But if you are using little extra distance, more than 1-hand distance or more than 2 feet distance, I recommend you should use an external microphone. It can be a lapel mic. A Poya mic comes in the range of 700-800 bucks, very affordable. I'm using a Rode mic which is worth of 28,000-29,000. It is the best mic right now for YouTubers. I'm using that mic. I recommend that mic to you, but do also check your budget and pocket. But if you cannot afford that, I strongly recommend you go for a Shure mic, which is also in mid-range. But if you want to go for a starting range, a Poya mic is also one mic which you can use. It has 3.5 mm jack, which can be connected to your mobile phone also. So the best part is when you will record your mobile phone videos, the voice will become clear. Voice is very, very important, especially when you're recording videos. So what is more important, a content or presentation? If you're recording the video, just type in the chat box. What is more important according to you, content or presentation? Okay, Rajkumar says presentation. Satinder Dey says both. Niku says presentation. Gusev says content. All right. I want you to answer why. If you have typed content, why content? Anybody? Yeah. Anybody would like to answer? Why content? If you have content, people would come to you to listen what you want to say. Presentation can be fancy, but if you have content, then your value of thoughts or your value of giving to the society matters. But presentation can be fancy. That's a cosmetic thing. Presentation is a cosmetic thing, whereas cosmetic is the real thing. What matters? Thank you. Okay, all right, Gursevji. Thank you for sharing your views. Anybody who would like to justify why content? Okay, anybody who would like to justify why presentation? Yeah, why presentation? Yes. Can I say? Yeah. Presentation. No doubt content is the main part, but presentation इसलिए पहले जरूरी है क्योंकि सबसे पहले कोई presentation देखकर ही content देखने के लिए आएगा. मतलब जो जो दिखता है वो बिकता है. The thing is कि पहले presentation जरूरी है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है. वीडियो का thumbnail जैसे है, अगर वो attractive नहीं है तो वीडियो कितना पावरफुल है वो अंदर जाके कोई देख नहीं पाएगा. I think जो मुझे लगता है. That is why I Okay, said. fair enough. Yes, Rajkumar, would you like to add on something? या नीतू जी की बात बिल्कुल सही है, गुरसेवक जी की भी बात बिल्कुल सही है, बट अगर आपका कंटेंट किसी भी तरह का है और प्रेजेंटेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं है, द होल शो कैन बी अ फ्लॉप शो. बट इफ योर presentation is very good, you can even simple content can be magical.
All right, all right. It's not, it doesn't matter what you say, what matters is how you say. Okay, fair enough. Satinder Deepthi, would you like to add on something? You are also an educator. सर आई थिंक कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं. कंटेंट भी मैटर करता है. कंटेंट भी मैटर करता है. अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है, आप एक बात को दूसरी बात से जोड़ रहे हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई कंटेंट में कोई बात ही नहीं है, प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छी दिखा दी तो भी कोई फायदा नहीं. और अगर कंटेंट बहुत अच्छा है और प्रेजेंटेशन नहीं अच्छा किया, जैसे मैम ने कहा है कि कोई देखने ही नहीं आता अगर थंबनेल जो है वो ही बढ़िया ना हो. मतलब दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए. तो 100% जैसे आपकी सर वीडियोस है, दोनों चीजें बहुत अच्छी होती है. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you everybody for sharing your views. So I asked you one question. What is more important, content or presentation? Some of you have said both. Some of you stick to your answers, content, and many of you said about presentation. But I want to share my answer with all of you now. Are you ready for that? My answer for this question is content is the kingdom. Presentation is the queen, and public speaker is the king. That's my answer for this question. And I think it has given the answer also, what I really want to say at this point of time. Content is the kingdom, presentation is the queen, and public speaker is the king. Having said that, now I want you to understand about the public speaking video production stages. So there are two stages, pre-production and post-production, and I'm going to talk about that. So in the pre-production stage, check out your camera angle, your script should be there. If you're using a prop, use prop. Story onboarding, how you are putting your stories across, lighting on your face, microphone, background. I think I've just spoken about this. Post-production, this is for people who are into video creation, content creation regularly. It's more for them. But some basics which I have already suggested you, whenever you are talking in front of the camera, watch in the camera lens when you're recording. And the best way of checking is record yourself for 30 seconds to test. You can use tripods for creating your quick videos, and do not forget to apply simple, easy language, preferably Hindi. Because if you apply Hindi language, that's the foremost language for Indians. 70% of the content is spoken in Hindi on YouTube. So lastly, I recommend all of you to get into video reels, and this is going to help you for your businesses also. Get into podcast. Start listening to podcast. Start listening to different podcasts of different genre. Start creating YouTube videos. Get into blog writing and get into video introductions. When you are sharing video introductions to people, you will automatically get prone to camera and public speaking. You're doing a lot of public speaking. Today, when I do messages, if I know somebody, I prefer to send a video message. Do you know WhatsApp has come up with a feature? Instead of sending an audio message, you can send a video message. If you have a long press on the audio, it will convert into video sign, and you can send a video message. Yeah. I was checking the feature, but I didn't get it. I think this feature is in Telegram. No, it's there in WhatsApp Business. I don't know about the normal WhatsApp, but in WhatsApp Business, this feature is there. It's a very useful feature, very effective feature, and I use this feature 3 or 4 times a day at least with different people. I talk to my team through video messages a lot. Anyways, thank you very much. I hope you enjoyed today's presentation, and I hope there was some takeaway for you to understand more about the techniques about speaking in front of video. Yes, Rajkumar ji, any questions? जोश टॉक पे आने के लिए व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स? जोश टॉक पे जाने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हो, आप अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो. मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सर जोश टॉक पे जाने के लिए. If you want, you can share that video, and I have given very authentic knowledge and information. So I can share that link. Kara, can you please share that Josh Talk link with the people over here? I think you will get your answer from that. मैं आज स्क्रॉल कर रहा था ना जब आपका वीडियो देखने के लिए कोई, तो उस पे आया था एक जोश टॉक वाला, मैंने देखा था. आप वो वीडियो देख लीजिए. I have given
all the answers related to your question, and I think a lot of people have seen that video. All right, great, super. Any other question? Gurseval ji, Neetu ji, Ajit, Ravi, Akhilesh, Satindra ji. Any question you have? Yes, go ahead. Yeah. Sir, I have a question. You have suggested me for the background, but अभी क्या है Zoom के अंदर तो ये feature है blur करने का, but when I'm going to record by my system, तो उसमें ये feature नहीं होता और मेरे पास कोई ऐसा peaceful मतलब area नहीं है जहाँ बैठकर मैं shoot कर पाऊँ. तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब या तो मैं नेचर में कहीं मतलब जो पेड़ वेड़ के पास बैठ के, क्योंकि अगर मैं प्रोफेशनल कुछ वीडियो कर रही हूँ शेयर तो पीसफुल एरिया होना जरूरी है. नहीं, आजकल नीतू जी बहुत सारे, आई थिंक यू आर डन विद द क्वेश्चन, शैल आई आंसर दिस? हाँ 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 बिल्कुल. आप नेचर के पीछे भी जाके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, नेचर को बैकग्राउंड में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर में करें, आजकल वॉलपेपर लग जाते हैं. आप एक छोटे से एरिया में 500-700 रुपए का वॉलपेपर लगा लीजिए और उसको बैकग्राउंड बना लीजिए, वो आप चेंज भी कर सकते हैं रेगुलरली. सेकंड, Right. आप कोई खूबसूरत कर्टन लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो आप कर्टन लगाएंगे तो वो कर्टन भी आपका बैकड्रॉप अच्छा सा बन जाता है. थर्डली, आप कुछ वॉल डेकोरेट कर लीजिए सो दैट वो वॉल पे भी आप कुछ अच्छा विजिबिलिटी दे पाए. तो ये 2-3 चीजें आप कर सकते हैं. और अगर आपके पास प्लेन वॉल है, आप प्लेन वॉल भी यूज कर सकते हैं. और अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन है, आप ग्रीन स्क्रीन में वीडियो लगाइए. और आजकल बहुत सारे एडिटिंग एप्लीकेशन है, मैंने अभी मेंशन भी किए थे, उससे आप वो ग्रीन स्क्रीन के को रिप्लेस करके कुछ वहाँ पे डाल दीजिए, एनिमेशन या प्रेजेंटेशन कुछ डाल दीजिए. Okay. Right. I'll try definitely. Thank you, sir. All right, everyone. Thank you so much for joining in. Tomorrow is the last day, and I have a lot of things to share with all of you. And keep recording your videos. And one session or one small video you have to record today also as a part of your homework. And the topic will be. Okay, I want you to record your video on effective communication tips. Okay, effective communication tips is the topic for today's video, and share your video in WhatsApp group directly. See you tomorrow. Bye bye. Namaste. Sat Sri Akal.